हेलो फ्रेंड्स, अशोक हियर। आज मैं आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाउ द टेलीफोनिक इंटरव्यू शुड बी। यहाँ आपने एक चीज़ गेस कर लेते हैं कि जिसने इंटरव्यू देना है उसका नाम है अशोक, और जिसने इंटरव्यू लेने के लिए फ़ोन किया है उसका नाम है शुभम। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। हेलो, हाय अशोक। हाय, हु इज़ दिस? Hi Ashok, this is Shubham calling from Rudra International IT Services, and I'm glad to tell you that you have been shortlisted for a job. Oh, really? Oh, happy to know that. And even it's been my dream to work with your company since I heard about it. Oh, really? It's our pleasure too. And congrats for your job. Now, Ashok, I will take your quick telephonic interview. So, are you ready for that? Uh, yes, sir. Go ahead. I'm ready for that. Ask what you want to ask. Okay, Ashok. So, Ashok, tell me, uh, what is your previous experience about the IT sector, and what is your exactly work where you have been before working, and what is your skills? What is the X factor within you? So, Ashok, as you know by my CV, sir, I have been four. I have the 4 years experience in this field, as I completed my diploma in computers. So I was there as a software developer, and the decoding the software issues, as we had a good clientele over there. They were always satisfied with my work to solve out their software issues. Oh, that's great, Ashok. Now, one more questions only I would like to ask you. Okay, sir, go ahead. Ask anything what you want to ask. So, Ashok, how can you help us to get the more business and the clientele to boost our company business? Ashok, actually, sir, satisfying the clients is the always the best way to boost the business. Increasing the clientage is the way to boost the business, but satisfying the every client is the best way to boost your business. Oh, lovely Ashok. You said everything what you which I wanted to hear from you. Excellent Ashok. Now I would like to invite you to join our company with your every expectation. Ashok, thank you sir. Thank you very much. I would love to work for your company. सो इस तरीके से ख़त्म होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो कि महज 3 या 4 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर तीन, मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, जिसके परफेक्ट आंसर देने के बाद आपका जॉब सिलेक्शन होना 100% हो जाता है। शॉर्ट लिस्टेड होना मतलब जो उन्होंने पहले सब इंटरव्यू लिए थे उसमें से आपका नाम चुना गया था, तो उसमें से भी नाम चुने जाते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होना मतलब आप खाली उन सब में से चुने गए हो, और आपने अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू अच्छे से दे दिया तो मतलब आपका जॉब फिक्स हो गया। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ कमियां हैं तो बताइए, और आगे ऐसे इंटरव्यूज़ या फिर वीडियोस, इंटरव्यूज़ रिगार्डिंग द वीडियोस, दूसरे कोई वीडियोस मैं डालता रहूँगा। लाइक कीजिए।